Artists are trolled and attacked the way Mr. Rahman is being as of now. उनके बारे में कोई बात कर रहा है, मुझे गुस्सा भी आ सकता है. Shararat created a big impact. पूरी दुनिया में शरारत is number 2. There's a world before Dhurandhar and there's a world after Dhurandhar. Shehnaz, for example, the sort of success that she's gained with the film. It is so beautiful to see ek kudi do so well and Khand Lagdi in Punjabi films. We need new heroines because Kick was my first Bollywood song. पहले वो गाना पंजाबी में लिखा था मैंने. तुसीला जवाब. Isn't it beautiful? When it comes to Dhurandhar 2, I have no idea. मैंने तो इतने गाने लिखे ना. जो अक्षय खन्ना का एक जो वाइब आया है इस गाने में, दीवानगी के हद तक लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं. It was not a performance. You don't follow anyone on Instagram. मुझे रखनी नहीं इंस्टा पे कोई कंपनी. What makes Jasmine Sandler smile? When I'm loved. Because the vibe is a vibe is a vibe now. Energy is everything. Hi, this is Jasmine Sandless and you're listening to Legacy Conversations with Faridoon Shahriar. It's a huge privilege to have Jasmine Sandlas with us. For the first album that she recorded, it was a $50 per hour studio, and she recorded 8 songs in an hour. Today, she is one of the finest artists. She's had a fantastic 2025. And the news is that her song Shararat is number 2 on the world charts, and it is ahead of her favorite, Bruno Mars. Jasmine, huge privilege to have you with us on Symbion Health Presents Legacy Conversations with Faridoon Shahriar. Hi Faridoon, how are you? I'm amazing. आप कैसी हैं? I'm feeling really, really good. Do you remember that experience of recording those 8 songs in 1 hour and that was $50 per hour? I do. I remember the anxiety that I felt. मतलब $50 per hour का स्टूडियो था और बड़ा देसी सा स्टूडियो था. इतना देसी कि साउंड प्रूफिंग के लिए उन्होंने बेडरूम की मैट्रेसेस लगाई हुई थी, right? So I remember being in a very small room with big dreams and I recorded songs back to back. मुझे था 1 hour है मेरे पास. 1 घंटे में कितना कुछ मैं गा दूं, डेमो बना लूं. ये डेमो बस मैंने रिकॉर्ड लेबल को देनी है और फिर मैं बन जाऊंगी स्टार. ये था मेरा सपना 20 साल पहले. Okay, शरारत. आपका सपना जो है वो ना सिर्फ पूरा हुआ है, you have created a big impact. ना सिर्फ इंडिया में, but I think on the world charts, the way you are literally happening, you not only have sung Shararat, you've also written it, partly with Shashwat Sadeva, the music composer. How do you respond to this sort of love that you're getting for Shararat and ahead of Bruno Mars? I'm so thankful. I am the luckiest girl. कि मतलब अभी मैंने कल ही न्यूज़ देखी थी कि YouTube globally में हमारा गाना शरारत is number 2. मतलब पूरी दुनिया में बहुत बड़ी है ये दुनिया, you know. और lucky, I mean, the best thing is that I wrote the song because it all begins from a thought, you know. And Shashwat and I were in the studio for a good month and a half. मैं रोज़ मिलती थी उसको, मैं रोज़ जाके कुछ लिखती थी और ये जो शरारत गाना है ये कम से कम हमने मतलब 20-25 दिन लगातार लिखा. कभी थोड़ी सी ज़्यादा हिंदी, कभी थोड़ी सी पंजाबी, कभी मेलोडी चेंज हुई. And what you hear right now, the song that is number 2 in the whole world was the final that Shashwat and I decided. And how lucky. I mean, I'm very thankful. I almost don't believe it. I'm living my dream life. I'm so thankful. What if you get a call from Bruno Mars and he says that he wants to collaborate with you? I'm ready. I would love to. I love his writing. I love his melodies. And, you know, it's been a very long time since he's dropped an album and he's about to drop one. And fans wait, you know, when you've earned the kind of love for the artist that you are, fans wait almost a decade for your next album, you know. And I love artists that have built a legacy. What is your legacy? Love. 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 And you hugely believe in energy. Yes. Energy is everything. And like you can feel my energy right now. मैं जो मर्जी बोलूं, you know.
बट आप फील कर सकते हो कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, आप ये भी फील कर सकते हो मैं आपके बारे में कैसा फील करती हूँ, आप ये भी फील कर सकते हो कि मैं अपने म्यूज़िक, अपने ड्रीम्स, लव के बारे में क्या सोचती हूँ, बिकॉज यू कैन फील इट, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स. Healthcare anywhere. Simian Health focuses on improving access to care through technology. मोहब्बत क्या है? मैं खुद ही हूँ. अपने आप से मोहब्बत इंपॉर्टेंट है. Takes decades to learn that. You know, that you have to love and honor yourself like a child of God, because you are, because I am, because we are. And when you love, honor, respect yourself, when you maintain your dignity, integrity, then I can trust that you can love somebody else. If you love yourself first. Now, you're a songwriter, you're a composer as well. Your approach towards music is not primarily just that of a playback singer. Do you think that an artist also tries to manifest ideal love through his art? Because in real life, many a times you don't get the sort of love that you have in mind, but you can definitely manifest that through your art for sure. मुझे वो गाना आप कंप्लीट करके बताओ ना. हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ प्यार जिंदगी में है ना, बट किसी किसी को मिलता है. If you really want it, if you really want it, you know, manifestation is such a beautiful word now that everybody is talking about manifesting. But जब एक छोटा सा बच्चा एक सपना लेता है ना, वो भी एक manifestation होती है, जबकि उसे पता नहीं है कि मैं manifest कर रहा हूँ, you know. And so these dreams that are reality now, my music career, the legacy that I'm building with every song, with Shararat being #2 on the global charts, these are my manifestations. And sometimes God's plan is way bigger than your own plan. Do you agree? Absolutely. आप बताओ ना 100%. कोई सपने के बारे में, जैसे आप अपना सपना बताओ ना, क्या है? मेरा सपना प्राइमरी ये है कि दैट मैं अपने खुद के प्लेटफॉर्म के लिए कुछ हमेशा से करना चाहता था, एंड फाइनली आई एम एबल टू डू इट, एंड आई लव द एक्सपीरियंस. ना मुझे सोने की फिक्र है, ना मुझे किसी और चीज़ की फिक्र है. आई जस्ट एवरी सिंगल मोमेंट इज समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव इट, एंड आई चेरिश इट, एंड I'm just living the experience in more ways than one. I can feel that you feel so happy talking about your dreams. You have a different smile on your face. In the last 5-10 minutes we've been talking, when I asked you about your dream, you were like blossoming. Because that's the beauty of dreams, you know. Right. There's a book that I've read. I haven't read many, but I've read The Alchemist. And मतलब I'm paraphrasing, उसमें कहते हैं कि चलो पंजाबी च गल करते हैं कि बिल्कुल. ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. So paraphrasing in English ਕਿ the universe's soul feels fulfilled when you make your dreams come true. मतलब it's not only in your favor to make your dreams come true, but also the universe really wants you to. Absolutely. Okay. कौन सी ऐसी बात है जो कि आप हमेशा जिसके बारे में आप बात करना चाहती थी लेकिन आज तक आपसे किसी ने पूछा नहीं? What is it that you want to talk about? The closest to your heart. I mean, using your platform for something more powerful than fame and glory. You know, I think I love artists who have gathered so much attention, popularity, fame, and glory, and then they do something great with it. Not immediately, but eventually. I really, really admire and love artists, you know, that do that. And I aspire to do that too. And I think that एक celebrity और एक artist में बहुत बड़ा फर्क होता है. Okay, so Jasmine, when someone like Shashwat Sadeo, for example, जब वो आपसे बताते हैं, you know that ये गाना है. Considering you're a songwriter, you compose as well. How do you process when someone tells you that, you know, this is the song and this is how it's going to be like? For Shararat, I wrote that song. Aditya Dhar and Shashwat, they had told me everything about the scene. I had imagined a visual where two women are performing at a wedding, at someone's wedding. They had not told me whose wedding it was going to be, right? And so ye ideas mujhe pehle bataye gaye the. And, you know, Shashwat had put this idea in my head a few months before the song actually
got finalized, right? उसने बोला था कि यार ये ना बहुत बड़ा गाना है, that's what he said, ये बहुत बड़ा गाना और इस पे ना हम बैठेंगे, इस पे हम बैठेंगे। और उसी दौरान हमने बहुत सारे गाने बनाए and शरारत needed to be a dance song. I was told that. But शाश्वत and I decided कि ना यार ये है तो डांस सॉन्ग है और लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं और थोड़ा सैसी भी चाहिए, थोड़ा सेक्सी भी चाहिए, बट थोड़ी सी इनोसेंस रखें इसमें, you know? And I thought that was a very beautiful idea to have a song that started with कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, वाह। नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा, पर पर्दे दे पिछे की है किसनू पता, एक अफीमी में चस्का चकावां। ये गाना गा के सुनाइए ना। Oh my God, Madhubanti has sung this so beautifully, I swear. When Aditya and Shashwat were telling me about this song and we're writing it together, we were all in the room together, the whole team collaborated, you know. ऐसे words हम हवा में फेंक रहे थे कि ये try करें, ये melody try करें, ये word try करें. So when they told me that there are going to be 2 performers at that wedding and we need another voice, I was like, so I think Shararat's success is a lot of teamwork, a lot of prayers answered. Matlab Dhurandhar overall feels like the biggest thing that's happened for Indian cinema in a very long time. Of course, 100%. बाकी stats शायद आपको ज़्यादा पता है, but मुझे ये पता है कि मतलब दुनिया पलट गई है धुरंधर के बाद। मतलब things are, it feels like there's a world before Dhurandhar and there's a world after Dhurandhar. And I feel like, you know, I speak to the whole team and we are celebrating the success of the movie together, the success of my songs together, and we all won. हम सब जीत गए यार। Correct. Dhurandhar as a film for Indian cinema, Shararat as a song, which is number 2 on the global charts. Dhurandhar title track as well. Amazing, Hanuman amazing Khan. energy, yeah. है ना? Hanuman Khan. It's a Punjabi classic song that is now elevated to a level where the whole globe is vibing to it. उनको शायद ये नहीं पता पंजाबी में बोल क्या रहे हैं। Doesn't matter. है ना? Because the vibe is a vibe ना। Energy is everything. और एनर्जी पूरी है। 100%. लेकिन आई थिंक पंजाबी म्यूजिक का जो एक, मुझे लगता है कि जो एक जिस तरीके का एक वेव है, जो एक स्पेनिश म्यूजिक का एक टाइम पे जिस तरीके से था, आई थिंक पंजाबी इज गोइंग थ्रू that route right now with Diljit and Karan Aujla and what Jasmine Sanders is doing. So it's truly outstanding. The language is so beautiful. It's very sonorous, first of all, and the vibe and the rhythm and the music is literally ruling the world charts right now. वाओ। मैंने ना ये हाथ से मैं गाने लिखती हूँ, ये आप पंजाबी में पढ़ सकते हो क्या? थोड़ा सा गैस करो क्या लिखा है। इस हाथ से गाने लिखती हूँ, यहाँ पे टैटू क्या लिखा है? गैस करो। Lyrics, पंजाब। ये इस हाथ से मैं गाने लिखती हूँ ऐसे, और वैसे तो कभी भूलता नहीं है, पर अगर 1 सेकंड के लिए भूल भी जाऊँ ना, पंजाब। This is it. This is the thing about roots. You know, ये शायद 5-6 साल पहले करवाया था मैंने। I am so deeply grateful that I was born in Punjab. पंजाब में मेरा जन्म हुआ। कैलिफोर्निया से मैंने सीखा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। I can be whoever I want, you know? And so I take my roots everywhere with me, obviously, because I sing in Punjabi, I write in Punjabi. And और यार पंजाबी ना अब ग्लोबल बन गया है। पंजाबी कल्चर, पंजाबी लैंग्वेज, एंड प्रॉबली कहते हैं ना जिस पेड़ की जड़ें जो बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग और वाइड होती है ना, वही पेड़ सबसे ऊंचा होता है। बिल्कुल, क्या बात है। ओके, नियत नूरानी, alliteration का क्या रोल है? You believe in alliteration and What is that? Alliteration is basically now niyat nurani, na niyat or nurani, so that is alliteration. Similar similar sounding कच्ची कली That's क्या word है? alliteration. Yeah. मुझे ना कुछ नहीं पता, ये बस फीलिंग ही है बस एक। मुझे ना सुर का पता है ना ताल का पता है। सारे गामा से आगे क्या होता है मुझे वो भी ज़्यादा नहीं पता। मुझे बस फीलिंग का पूरा पता है कि मैं फील क्या कर रही हूँ, मुझे लिखना क्या है, उसको डीपली फील करके मैं लिख भी सकती हूँ।
बस इतना ही है। वो एलिट्रेशन मुझे पता नहीं था, मैंने 2 बार कर दिया गाने में। नहीं, आपने आपके और भी बहुत से गानों में आपके होता है। फ्री स्पिरिटेडनेस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यू नो दैट एलिमेंट ऑफ फ्रीडम, दैट एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की वजूदगी। Faridun means unique, ओके, या as you had just shared with me. We are all so unique. And दुनिया कई बार भुला देती है हमें कि हम कौन हैं. But we are literally the perfect creation of God, each one of us. उसी को याद रखना है बस. और इसी में अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रहती है. इसी में हमारी जो आइडेंटिटी है. कितना प्यारा क्वेश्चन है ना. That freedom, feeling free in truly who you are is probably one of the biggest blessings. And I tap in and out of it. कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ. Opinions बहुत है ना दुनिया में. Correct. You know, but फिर याद आ जाता है that I'm unique. And No, there's you are, for example. Dancing. Is it a form of an expression for you? Because when you dance, for example, you are dancing for yourself. You're expressing yourself. Your body is expressing, and you just don't care. And which is beautiful if you can do that, if you can achieve that. You're not dancing to impress. You're dancing because it's something that's joy for you. It's amazing. My favorite dance is the dance I do when nobody's home. I play my favorite songs. Sometimes I dance to prayer, you know, and that is the only moment that's actually true, you know, because everything else kind of is a performance, you know. Right now, this is very close to who I am as a human, very, very close to who I am as an artist, but I know that cameras are on. I know that people are listening behind the cameras. I know 1 billion people might see this interview, fingers crossed, you know. So थोड़ा सा तो performance आ ही जाता है यार कैमरा देख के, but जब कोई नहीं देख रहा होता ना, that's when I truly am who I am. Right. I genuinely feel that any human being, they have a very strong duty towards themselves, and they must do things to please themselves, to make themselves happy. Jasmine Sanders likes to color her hair, has those tattoos. Does that make you happy? Does it break the monotony in a way for you? Every time I'm going through a major life change, a new phase of my life, I like to do something to my hair. मतलब जो लाल मेरे बाल थे, I colored my hair red in 2016 when I first became very, very popular, especially in Punjabi music. My song Bum Jat was massive, मतलब a surreal moment. And then फिर बड़े साल बाद 2023 में शायद मैंने फिर रेड किए बिकॉज मुझे भूल गया था कि मैं कौन हूँ. तो फिर खुद को याद करवाने के लिए मैंने रेड बाल किए एंड इट सर्व्ड मी वेल. देखिए, आपको अंदाजा भी नहीं, लेकिन ये है कि आप राइमिंग आपकी नेचुरली फ्लो करती. लाल मेरे बाल थे. ये भी एक तरीके का, मतलब इस पे भी गाना हो सकता है, लाल मेरे बाल थे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. So which is wonderful. All right. Now, when it comes to Dhurandhar 2, कितने गाने हैं Dhurandhar 2 में जैस्मिन सैंडलर्स के? I have no idea. मैंने तो इतने गाने लिखे ना, होपफुली एक तो होगा ही. I hope. Right. पता नहीं, हमने तो गाने बनाए थे 1-1.5 महीना. शाश्वत and I sat together. 2 projects were going side by side. Bads of Bollywood and Dhurandhar. Bads of Bollywood में मेरा आशिकां दी रात बड़ी रंगीन आशिकां दी है ना, और ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ. I wrote these songs and I sang the Ashika song. Rusya Jubin sang because it was a scene where there are 2 friends that are boys and they wanted a boy to sing that song. So I wrote Rusya. It's one of my favorite songs ever. All the songs I write are based on true stories because I've felt it, I've lived it, and so it's very easy for me to write that song. But Kachi Kali, Sada Masoom Chehra, Niyat Nurani, Sada Dil Hai Sunehra. I just thought, okay, if I could make a sexy song that the world can dance to, but also have a little bit of grace and innocence in it. So I started the song with Kachi Kali.
साडा मासूम चेहरा. Okay, how do you make a sexy and seductive number still graceful? Let me sing it for you. Yes. हाँ हाँ तूने पर्दा उठाया क्या बात हो गई है ये मुलाकात वारदात हो गई. नैन मिलाए हमने एक दूजे से यूं रात हुई फिर दिन फिर से रात हो गई. Wow. कच्ची कली साडा आ जाओ फिर come on. कच्ची कली साडा मासूम चेहरा नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा. कच्ची कली साडा मासूम चेहरा नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा. पर्दे दे पीछे की है किसनू पता पर्दे दे पिछे की है किसनू पता एक अफीमी में चसका चखावा तेनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा. Fantastic. जो अक्षय खन्ना का एक जो वाइब आया है इस गाने में, हाँ जी. कैसे देखती हैं आप उसको, जो दीवानगी की हद तक लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं? He deserves it. It's so beautiful. I mean, how many times an artist prays for that kind of love and glory, and how many times fans pray for an artist to be glorious, you know? So ये सब actually prayers ही हैं जो जिनका जवाब मिल रहा है हर आर्टिस्ट को. और उनके सीन्स तो इतने वायरल हो रहे हैं यार, मज़ा आ रहा है उनको जीतते हुए देख के, मज़े आ रहे हैं. वो जो डांस किया उन्होंने शरारत पे, It's very beautiful. Yeah. कैसा था? कैसा Yeah. था? मुझे नहीं करना आता. but he's enjoying himself. Yes, He's that's literally all it is. Nah, that's all it is. It was not a performance. Have you spoken to him after the movie? I have not. I mean, we're sharing the success together. You know, we're posting and reposting the success of songs and the viral memes and the moments and stuff. But ऐसा face to face अभी बात नहीं हुआ. Okay, intuition का क्या रोल है आपके म्यूजिक में, आपकी लाइफ में, when you're just interacting with people, instinct, gut feeling? I've just recently started to trust myself. A few years ago, it you know, like I said, कि you know, दुनिया इतनी रंगीन है कि लोगों के रंग आपको चढ़ जाते हैं, लोगों के opinions आप internalize कर लेते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि इन सब आवाज़ों में से आपकी आवाज़ कौन सी है, right? So, thankfully, sitting alone through COVID and many years after that, and you know, just kind of muting certain opinions of कुछ तो लोग कहेंगे टाइप्स, कुछ नहीं कह रहे लोग, सब चुप हैं. Correct. मुझे नहीं सुनता लोग क्या कह रहे हैं. And that's when you can hear what your own intuition says. And you know, the thing about intuition is that it will speak to you so softly. Correct. And it would be a very effortless message that only you can hear and understand. And sometimes what happens is when you don't listen to your intuition for years and years and years, it stops talking to you. So then it's kind of like you say sorry to your intuition. You say, मुझे माफ़ कर दो, मैं लोगों की बातों में आ गई थी, मैं लोगों की आवाज़ ज़्यादा सुन रही थी, अब मैंने सबको चुप करवा दिया, मुझे कुछ नहीं सुनता, मेरे साथ दोबारा बातें करो. क्या बात? तो फिर intuition दोबारा बोलती है. Or it's everything. It tells you what's right. When it feels good, when it feels comfortable and cozy and blissful, that is a yes. If you're feeling restless, anxious, or थोड़ा सा agitated, that's a no. ऐसे ही तो बोलेगी intuition, खुद थोड़ा सामने आ जाएगी. Correct. आप बताओ. नहीं, 100%. I genuinely believe, you know, that in fact मैंने कहीं पढ़ा है, I read somewhere that 75% of the fears that we have, they are unfounded. They're non-existent actually, and we're just worrying about things that are not existing. And instinct is something, it's also driven by
your mind space in terms of if you have a certain positive mindset, then your intuition and instinct will be different compared to when you are being fearful. डरने का नहीं है. डरने का नहीं है, अगर डरने का फिर भी करने का है. बिल्कुल. अगर डर लग रहा है तो फिर तो और करो. हाँ, अगर डर लग रहा है तो फिर तो और करो. बेस्ट है. चढ़दी कला. चढ़दी कला. हाँ जी. फट्टे चक देना चाहिए. अब मजा आ रहा है यार. अब हमें ना ये पॉडकास्ट का ना, ये हमारी कॉन्वर्सेशन का हमने दिल पकड़ लिया है. अब अच्छी बातें होंगी. आ जाओ मैदान में. आपके दिल में ऐसा क्या है जो आपको बहुत अजीज है? मेरी फैमिली, उनका प्यार. मुझे बहुत सक्सेसफुल और रिच फील होता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठती हूँ. अभी it was Lodi and I was in Punjab for a whole week. My nani, my cousins, my masiya, my mama ji and my nieces and nephews, I was with them dancing, celebrating, praying together. It was the richest week of 2026. और अभी तो साल शुरू ही हुआ है. कहते हैं ना, साल की शुरुआत में जो कर लो ऐसा ही रहता फिर साल. फिर आप खुद ही देख लो, शरारत नंबर 2 पे है पूरी दुनिया में. फैमिली के साथ अभी पूरा हफ्ता में रह के आई. ओ जो मैंने अच्छे खाने खाए. जानदे ही मक्की दी रोटी, सरों दा साग. जानदे. क्या बात है. Yeah, it was just a very rich and blissful time. मज़े आ गए यार. And सबसे अजीज फैमिली और मेरे सपने. बस यही है. आपके फादर अपेरेंटली आपके गाने शुरू में बार सुना करते थे ताकि उसके व्यूज बढ़ें यूट्यूब के ऊपर. सुरेंदर सिंह सैंडलस, मेरे पापा. Yes, when I released my first song, Muskan, in 2008, वो अपने डेस्कटॉप पे बार सुन रहे थे. और गाना बड़ा खूबसूरत है. और मैंने उनको पूछ ही लिया. शायद मम्मी ने बताया मुझे पहले कि पापा ना सवेर दा तेरा गाना सुनी जान डे ने. ते मैं कहा पापा तुसी मुस्कान बार क्यों सुन रहे हो? तो उन्होंने कहा टिनी बेटे तेरे व्यूज बढ़णगे. That's so beautiful. And that's how parents support you, you know? Not in the way you need, in the way they know how to. Right. And from that moment, they were very protective, of course. There's a beautiful interview that I've, जिदा तुसी मैनू इंटरव्यू कर रहे हो, मैं उन्होंने इंटरव्यू किया. It's on my YouTube channel. And I'm asking my father कि पापा मैनू 6 महीने होर दे दो, मैं स्टार बनना है, मैं सक्सेसफुल होना है. ते पापा कहते तू अपना टाइम वेस्ट कर रही है. साडे केड़ा फैमिली च कोई म्यूजिशियन है ना, तेन कुछ आंदा म्यूजिक का. मेरी मम्मी भी मुझे कह रहे हैं नैले ते देला, शी सेइंग तुझे म्यूजिक का कुछ नहीं आता और तू रहन दे, हॉबी रखो इसको प्रोफेशन मत बनाओ. और मम्मी से लिटरली बेगिंग ऑन दैट वीडियो, मम्मी प्लीज 6 महीने दे दो. एंड दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. दैट वाज मे बी 2012. That's a long time ago. और अभी भी वीडियो वो है यूट्यूब पे. और कभी मैं दिखाती हूँ मम्मी को कि ये देखो मजे आ रहे हैं ना. और ये वीडियो सबने देखी है. आपने रोका था, मैं डर गई थी पर फिर भी मैं कर गई थी. What makes Jasmine Sandler smile and laugh from within? When I'm loved, I feel happy. I feel like I am blossoming. When I'm loved, when I'm seen, when I'm understood, I feel like the inner child that lives in my heart. That's what she always wanted, you know, the little girl that lives in my heart. That's what she always wanted, is to be loved, you know. शायद इसी चक्करों में मैं आर्टिस्ट बन गई, because प्यार बहुत मिलता ना. ओके, हम लोग यहाँ पर साजिद भाई के ऑफिस में हम लोग यहाँ पर हैं. Kick was the first time in a way that you just literally blew up as far as Bollywood scene is concerned. How do you look back at? Yeah, I was just at the Big Boss stage, right? And that was the first time I got to have a beautiful conversation with Salman ji, and I said, you know that Kick was my first Bollywood song. And he's very happy, and he's like, and what a song to begin with, you know? And वैसा ही हुआ था. हनी सिंह की मुझे कॉल आई और उन्होंने बोला कि गाना लिखना है. एंड आई सेड ओके. आई थिंक आई गूगल्ड ऑनलाइन कि व्हाट इज़ किक. इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिल जाती है गूगल पे ना. सो मुझे शायद टीजर आ गया था. आई हैव नो आइडिया, इट्स ब्लरी. इट वाज मे बी 10 years ago. कब आई थी किक यार? 2014.
लिटरली 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं. सो माई मेमोरी इज़ अ लिटिल ब्लरी बट आई रिमेंबर नोइंग अ लिटिल बिट अबाउट द मूवी कि उसमें किक वर्ड बहुत यूज़ होता है. एंड डेविल, मैंने बोला अगर डेविल है तो एंजल का भी मैं जिक्र कर सकती हूँ. और पहले वो गाना पंजाबी में लिखा था मैंने. अच्छा. आहो. और गाना पता कितना सी. Wow, I've never mentioned this before. I was like, तुसी लाजवाब थोड़े नखरे हजार. Isn't that beautiful? Please continue. है ना? Okay, so I said, तुसी लाजवाब थोड़े नखरे हजार. मेरा भी पता है मैं ना मन्ना कदे हार. So that was the beginning of यार ना मिले. And But after then- that? And after that, I think it was similar. You know, तेरी मेरी दुनिया च बेहिसाब प्यार. मैं हाँ एक एंजल ते डेविल मेरा गा के सुनाई ना. है. गा के सुनाई ना. Okay, so तुसी लाजवाब थोड़े नखरे हजार. मेरा भी पता है मैं ना मन्ना कदे हार. तेरी मेरी दुनिया च बेहिसाब प्यार. मैं हाँ एक एंजल और डेविल मेरा यार. And then it's तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं. जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही. परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी. पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं. जे मैनू यार ना मिले ते मर जाना. मरण मेरे दुश्मन. Healthcare anywhere. Simian Health focuses on improving access to care through technology. That's absolutely outstanding. Okay, when you're collaborating with the likes of Bohemia or Honey Singh, what's the energy like? What's the vibe like? It's beautiful. And do you like the rap portions? Do you like that? Because when it comes to Dhurandhar as well, that is beautifully done. I think I have a rapper soul. I think I have a soul of a rapper. I mean, I'm from California, right? So hip hop is the soul of California. And मतलब जब बोहेमिया के साथ पहला गाना किया था ना, अद्धी राती, वो बहुत फेमस हुआ था 2012 में. मेरी एल्बम थी गुलाबी, जहाँ से मेरा नाम पड़ा गुलाबी क्वीन. Correct. So it was like, I remember making this album and I was like, what am I going to name it? What am I going to name it? And Gulabi, you know what this was inspired by? A French song, La Vie en Rose, Okay. Life in Pink. I'm paraphrasing, matlab ke? La Vie en Rose. इतना खूबसूरत गाना है. I think the artist's name is pronounced as Edith Piaf. And I used to hear that song a lot in 2010, 11. And I was like, if I name my album something, it should be something inspired by that. And Life in Pink. And I was like, Pink, Gulabi, Gulab, Rose. मतलब ऐसे thoughts मेरे मन में घूम रहे थे. And I called my album Gulabi. And मेरे fans ने मेरा नाम रखते हैं Gulabi Queen, which I have no idea what it means still. Gulabi Queen मतलब क्या? But it's everything to me now. You don't follow anyone on Instagram. I know. क्या है इसका मतलब, क्या है आपका, क्या सोचते हो इसके? नहीं, मैं किसी को कुछ जज नहीं करता हूँ. I'm just curious. क्यों नहीं? Any specific reason that? यार पता क्या, लोगों का कोई भरोसा नहीं है. ठीक है, हम तो ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे. पर किसी को गलती से फॉलो कर लो इंस्टा पे और वो मैसेजेस आने लगते हैं. नहीं वो नहीं. For example, let's just say I'm following 100 people on Instagram, right? But then they start to do things that I don't agree with. Then it's very tacky to unfollow them. ये follow unfollow वाला मुझसे होता ही नहीं है. तो एक टाइम पहले ना, मतलब बहुत साल हो गए हैं, I don't follow anybody on Instagram. I really love and admire some people, but I don't have to show the world who that is, you know. ये kind of एक association भी तो होती है ना कि एक artist किस artist को follow करता है, वो भी एक performance ही तो है, you know. और मुझे उस performance में zero interest है. और जिनको मैं प्यार करती हूँ उनको पता है. और फॉलो मैं इसलिए नहीं करती पब्लिकली किसी को, क्योंकि भरोसा किसी का नहीं है, कौन कब कैसी हरकत कर दे. और देन आई बिकम गिल्टी विद एसोसिएशन. यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप ना. Of course. तो मुझे रखनी नहीं इंस्टा पे कोई कंपनी. Okay, so 2025 आपका कमाल के गया है. 2026 ख्वाब क्या है जैस्मीन सैनलास के? What is it that your ultimate dream? Like a Grammy? Do you want to win like a Grammy or like an Oscar? Is that? And
You know, when you're talking as well, आपके जो expressions हैं वो एक actress वाले हैं, और obviously singers are performers, and that's something which is beautiful as well. But is acting on your mind as well by any chance? So what are your aspirations like I think I'm ready. for acting? Yes, I think I'm ready. All these years I was so devoted to music, and it's been a few decades now. Literally 18 years ago I released my first song. And acting से मुझे डर लगता था कि यार I'm a writer, I'm a singer, I'm a performer, but मैं actor थोड़ा हूँ. But यही तो एक actor होता है, किसी चीज़ को deeply feel करना, चाहे वो खुद की feeling है, चाहे वो किसी character की feeling है, उस चीज़ के साथ empathize करना, उस चीज़ को fully live out करना, यही तो मैं करती हूँ 3 मिनट की वीडियोस में. You know, so I think I'm ready. I mean, I would love to be a part of, especially Punjabi cinema. I think they could really use my contribution. You know, I love Punjab, and just like Punjab is in my heart, I am in the heart of Punjab. So, matlab, before I think of any other genre or cinema world, I would love to, you know, stand for something that is the heart of who I am, you know. So Punjabi cinema, Hindi cinema, Grammy. So there's this really beautiful message I sent to an artist that the whole world loves. He is an icon. It's a private conversation, so I won't say his name, but he is like the greatest of the greats of Indian music. And A.R. Rahman? Waheguru. सही जवाब? Now I can't tell you the conversation I had because यही तो मैंने. But No, you can go ahead. I'll paraphrase. I'll tell you a little bit. I have a vision board at home, and on that vision board is him handing me a Grammy. A.R. Rahman handing you a Grammy? Knock on wood. Yeah. Does it bother you when artists are trolled and attacked the way Mr. Rahman is being as of now? What do you mean? Yeah. I don't know. What? His interview became rather controversial of late. I have no idea. Okay. You know, ये मुझे ना बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है. ये जो ट्रोल्स या ये जो मजाक उड़ाते हैं ना लोगों का, ये बहुत गंदी बात है. पहली बात नंबर 1. और उनके बारे में कोई बात कर रहा है, मुझे गुस्सा भी आ सकता है अब. क्या है बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आई थिंक लेट्स नॉट गेट इनटू इट. थोड़ा सा बता दो, खुद कट कर देना इसको अगर आपने बात नहीं करनी तो. No, it's become I think a big controversy right now. क्या है? Yeah, multiple things that he has spoken. And, For example, tell me one thing that you're comfortable sharing with the world. like for example, he mentioned that there was certain discrimination that happened within the last 8 years in Bollywood and stuff like that. So that's what he has mentioned. Okay. For example, what discrimination? He is the icon of all icons. What do you mean? Like, I don't know what you're saying. If you're not aware, then I think maybe we should not talk about it. Okay, because ठीक है. It's in a different zone altogether. अच्छा ठीक है. All right. So, How do I feel? Okay, so I'll answer your question in an overall generalized manner. How do I feel when artists are trolled? I really don't like it. Artists are the light of the world. Artists, singers, musicians, writers, anybody who's creative is literally the soul of the universe, you know? So I think that when the people who are the audience, they troll the artist, who is first of all very vulnerable to put themselves out there, you know? बहुत ये दलेरी वाला काम होता है, खुद को लोगों के सामने लेके जाना. Public speaking is one of the biggest fears that the world has, right? Humans have on this planet कि लोग मुझे जज ना करें, मुझे कोई बुरा ना कहे, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, right? So I think when an artist puts themselves out there and they're trolled for it, that's so discouraging for the future generation of artists. जो नेगेटिव कमेंट ही करते हैं ना, वही लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, ऑनेस्टली. मतलब क्यों कह रहे हो कि तू अच्छी नहीं लग रही, तेरा गाना नहीं अच्छा, तू अच्छा नहीं लग रहा, मोटी पतली काला गोरा, क्या है ये? अपीयरेंस में तो कमेंट करना बैन ही कर दो. correct. है ना? और किसी के और पता क्या, ओपिनियन देने का उसको हक है
जो खुद वो काम करता है. To be honest, I want somebody I love who's a musician, a writer, a singer, an actor, somebody in the creative field. They can definitely tell me, Jasmine, you know, I think you can be more expressive. I would say, sir chuka ke. Thank you for saying that. If somebody who is in a creative field, and especially a senior artist who has done the things that I aspire to do, I would love their constructive feedback. But the people who have never sung a song or never acted in a movie, why are they giving opinions to people that are, you know, putting themselves out there and being vulnerable for the world and healing and empowering people and entertaining people? क्यों हैं ऐसे लोग? मुझे बताओ. बिल्कुल. देखिए होता क्या है कि दुनिया में मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने आप को अपने अपने वजूद को जो है दूसरों के सामने रखने से डरते हैं. दे ओनली प्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड पर्सनैलिटी विच दे फील विल बी अग्रीएबल to the world norms and societal norms and the works, and they keep on pandering to that entire whole idea for the rest of their lives. Okay, पिछले साल आपका एक और भी गाना बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है, that is खांड लग दी from एक कुड़ी. Yes. And you while recording it, I think you mentioned that it's one of the most beautiful experiences that you've had. It was one of the happiest songs I've ever sung in my life. खंड लगदी कुड़ी ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਕੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਖੰਡ ਲੱਗਦੀ. So how do you look at someone like Shehnaz, for example, the sort of success that she has gained with the film, and उनकी भी journey जिस तरीके की है that she has made literally like solid efforts to just transform the image that she had of that big boss icon, and now as an actress that she wants to be taken seriously, and equally does that, for example. Did you find that like a success story in a way? I think it is so exciting to see new Punjabi heroines emerge. It is so beautiful to see Ek Kudi do so well, and Khand Lagdi was kind of like the introduction to the movie. It was so beautiful that they kind of introduced the film with a happy song like that, you know, and lucky for me, I got to sing it, you know. And along with Shehnaz, I am so excited to see more girls emerge from Punjab or globally. I mean, you live in Canada. There are literally that where you live is basically Punjab. Correct. You know? So, I mean, Punjabi girls, where are you at? We need the heroines in Punjabi films. We need new heroines because the icons that we have, we love them, you know, and new stories need to be told. And maybe somebody who comes from different parts of the world, who's had different experiences, whether they live in America, Canada, England, I think that I'm so ready to witness the glory of more actresses in Punjabi cinema. That's amazing. Okay, and Jasmine, finally, the likes of Surinder Kaur ji, for example. You said finally. Are we done with the interview? In the sense, like, we're talking about legends, inspirations, and women. Yeah. So Surinder Kaur ji, for example, and so many other wonderful voices that have emanated from Punjab, female voices. What has been their role in terms of just forming your entire personality and your singing? Surinder Kaur ji is called the Koil of Punjab, you know, and the demo that we spoke about in the beginning of the interview, I was singing Surinder Kaur ji songs, you know. One of the songs was Dachi Vale Amod Muharve, Dachi Vale Amod Muharve, Soni Vale Ale Chal Naal Ve. Her songs like Ek meri akh kashni Duja raat de neend rehne maarya Sheeshe nu tared pੈ ਗਈ ਵਾਲ ਵਾਉਂਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ
इन्हां अखियां च पावां किवें कजला वे अखियां च तू वसदा मैनू हीरे हीरे आखे हाय नी मुंडा लंबड़ां दा नी मुंडा लंबड़ां दा मदानिया वाह हाय ओ मेरे डाडे अरबा कि ना जमिया कि नाने ले जानिया है जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया वाह I could go on and on and on and on and on. I mean, Surinder Kaur ji is such a part of my upbringing. मतलब उनसे बड़ा आइकॉन है ही नहीं पंजाबी कल्चर में, absolutely you know. Absolutely. And she's considered the coil for a reason, you know. Her voice is impeccable. I mean, the soul of that era, you know. And I used to sing her songs on stage जब मैं खुद नहीं लिखती थी. And when I was 16, 17 years old in Stockton, California, I used to sing Dachi Walia. I used to sing all the songs on like कभी भी कोई दिवाली शो है मेरे शहर में, छोटा सा शहर, 100-200 ऑडियंस, कोई वसाखी शो है, लोहड़ी शो है, ईद शो है, मैं हर शो पे ऐसे जाती थी कि ये मेरा ना कोचैला है. क्या बात है तो मैं ऐसे गाती थी, मतलब I wouldn't even have music. I was singing a cappella, you know, because that was the extent of my knowledge. You know, मैं mic मुझे पकड़ा दो मैं गा देती थी ऐसे ही, you know. So Surinder Kaur ji, and I mean the iconic singers Noor Jahan, and there's so many people that I love who, if I want to remember what legacy feels like, I think of them. You like ghazal singing? I do. Jagjit Singh ji, oh my God. So Surinder Kaur ji and Jagjit Singh ji was a big part of my career, my childhood, that finds its way in my career. The melodies, the blissfulness in the kind of songs I write. My songs that are very like personal, they're very ghazal kind of feel to it. आपको कौन से जॉनर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? लाइक हिप हॉप आपको पसंद है कि आपको गज़ल्स पसंद है, क्या आपको पंजाबी सूफी पसंद है, क्या पसंद है आपको? I really love Punjabi folk so much. I wish that I could sing a new era of Punjabi folk songs, because मैंने सुरिंदर कौर जी के, नूर जहां जी के गाने बहुत गाए हैं स्टेज पे. When I was becoming an artist that I am today, I used to sing their songs on stage, and मुझे लोग बहुत प्यार करते थे when I would sing a सुरिंदर कौर song, for example. And मेरे लिए पंजाबी folk बहुत बहुत मेरे दिल में है वो. And I love hip hop. I'm from California, you know. I love R&B. I love R&B. मेरे पंजाबी गाने भी बिल्कुल R&B लगते हैं, you know, rhythm and blues. And I love jazz music, Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald. I love these people. I haven't listened to jazz for a long time because I'm so Bollywood now. Like I've been in India for so long that I've kind of like put my California personality on the back burner, what I used to listen to back like a decade ago, you know? So ये जो journey मेरी चल रही है, I'm very much immersed in Punjabi music and the music that I'm making, and Hindi music, Bollywood songs. I love ghazals too. Jagjit Singh. It's the ghazals that I heard when I was little. I didn't understand anything about the lyrics. And my Tayaji used to play Jagjit Singh ghazals all the time, you know. So from my mom, she's a big fan of music, I fell in love with Surinder Kaur ji. And for my Tayaji, he used to love ghazals. And, you know, he used to play a lot of Jagjit Singh. In the background, I can still hear a vintage song playing in the background. And ek gana hai, there's a lot of songs that are about yearning and about feeling incomplete, you know. And there's a song, there's a ghazal. It goes like, बात निकलेगी तो फिर दूर
थलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर थलक जाएगी। वाह। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, वाह। ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। वाह। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, वाह। एक नजर जाएगी गुजरे हुए सालों की तरफ। रा 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 आप जब अभी आप जब गा रही थे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी आप। You were in some different zone altogether, different. And what is beauty for you? What makes you beautiful from within? A one word answer is the heart. And You know, I think our inner childlike heart, our purity, our innocence, our truth, our integrity, वाह। ये वो चीज़ है जो हमेशा के लिए आपके पास ही है। You know, I'm getting older, we're getting older. बालों के रंग चेंज कर लेते हैं कभी कभी, but I think God has created us with such beautiful hearts, you know. We carry a little bit of God with us, you know. So I think the heart is the most beautiful thing in a person. I want to express that. I've never spoken about this before. पहली बार बात कर रहे हैं. Yes. This is my own mathematics. Either there's God in your heart, divine, pure, innocent energy, or चालाकी. क्या बात। So ये परसेंटेज सब में होती है. इसी में 90% divinity and grace and love and truth, integrity, and 10% चालाकी. चलो इतना तो रखना ही पड़ता है दुनिया में सर्वाइव करना तो, बट कईयों में 90% चालाकी होती है. You can see who's what when you meet them, you know. Okay, when Jasmine Sandler looks at herself in the mirror, what is your self-talk like? My self-talk. Last few years has been really beautiful. I'm saying good job, you're killing it, you know. And my excitement lasts maximum 15 minutes. जब भी कुछ बहुत बड़ा होता है ना, like शरारत or धुरंधर or तरस or खंड लगदी, songs, sold out concerts, and you know, fans getting matching tattoos with me. These are big things. मेरी excitement, honestly speaking, lasts maybe 15 minutes. If बहुत बड़ा कुछ हो गया, then 15 hours. उसके बाद मुझे वो feeling ही भूल जाती है. And मैंने पता Instagram पे कुछ देखा था recently कि our brains are designed to keep us safe, and you know, our brains are, you know, designed to, you know, help us survive and Comfort, grow. comfort. Look for comfort. Yes, so safety, right? Our brains are not made for permanent bliss. So mind को समझ नहीं आता एक दो दिन के बाद कि ये मतलब वो फीलिंग खुद ही फेड हो जाती है जब कुछ बहुत बड़ा होता है ना. दैट्स व्हाई यू नो ये जो बाहर वाली चीज़ें हैं ना, सक्सेस, पैसा, फेम, शोहरत, बहुत सारी अप्रिशिएशन दुनिया से जो मिलती है हर एक आर्टिस्ट को, यार ये फीलिंग ना फेड हो जाती जल्दी. ये फॉर एवर वाली चीज़ है ही नहीं है. तो इसीलिए वी आर सो हंग्री फॉर दैट फीलिंग अगैन. इसी चक्कर में और गाने रिलीज करते हैं और फिल्म्स और you know, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं because we want that love and that validation and that appreciation from the world so much. Don't you agree? Absolutely, 100%. कुछ बहुत बड़ा होता है ना, वो एक दो दिन में भूल भी जाता है.
And my mind is thinking, अच्छा अगला गाना कौन सा लिखना है, आगे क्या करूँ? That sucks, you know? But it's really great because then you keep fulfilling your purpose, whatever it is. 100%. 100%. हाँ. Okay, so Jasmine, spirituality का, Sufism का क्या रोल है आपकी लाइफ में? It's something I never used to talk about before because it's so private, you know. Our connection with the universe, our connection with the God is so sacred. मतलब जितना हम उसके बारे में बात करते हैं, I think वो थोड़ा सा फेड होता है हमारे लिए, मुझे लगता है. और ये जो दुनिया ना, ये मोह माया वाली दुनिया, you know, the world of magic and you know glitter. I feel like ये दो चीजें इतनी opposite है ना. एक तरफ गॉड है, एक तरफ चालाकी है, राइट? सो मतलब ये जो चमकीली दुनिया है और इट्स बट दिस इज द रीजन आई एम हियर, यू नो. आई begin my day with prayer. Almost every single day. If I'm on a flight, then I pray on the flight. If I forget to pray in the morning because we're running out of the house, I pray before I go to sleep. I've had faith that things will be great all my life. Not once did I feel hopeless in my life because God, you know, God has my back. बिल्कुल. People are scared of loneliness. People are scared to be lonely, and that is why a big chunk of the people in the world they make relationships which are not healthy for them, and they're just doing it because of a compromise. But a lot of people who have achieved something in life, they also believe that loneliness is a blessing. When you're alone, if you can be with yourself, if you can make art when you're with yourself, that's the biggest form of strength that anyone can possibly have. What are your views? And that's beautiful. So there's a big difference between loneliness and solitude. Beautiful. I love solitude. I don't want to be lonely, you know. मतलब कई बारी बहुत बड़ी महफिल में भी ना आपको अकेला फील होता है. मुझे होता है ऐसे अक्सर फील. मेरा दिल नहीं लगता लोगों के साथ. But solitude में मैं बहुत खुश रहती हूँ. When I'm home alone, I listen to my prayers. I dance to the music that I love. You know, I love writing in my journals. I love writing songs when I'm alone, whether it's at home or at a cafe. You know, मतलब solitude has recently become my bliss. Wow. मुझे बहुत डर लगता था अकेले रहने में. हाँ ना, like loneliness से बहुत डर लगता था. ये बचपन के ही ट्रॉमे हैं, you know, कि कहीं कोई मुझे छोड़ ना जाए, you know. No, blessing in solitude is heightened maturity, and which is beautiful. नदी का किनारा है, पहाड़ है, और नदी बह रही है. बहुत ही एक उर्दू का वर्ड है तसलसल. It's like literally flowing like gleefully. जैस्मिन सैंडलर्स वहाँ बैठी हुई हैं, उनके पैर उस पानी के अंदर हैं. क्या कैफियत है? क्या कैफियत ये क्या है? फीलिंग. क्या फीलिंग है? कैफी आजमी शबाना आजमी's father, कैफी. तो कैफियत is basically what's the feeling like? It's beautiful. Gratitude. So much gratitude. Immense presence. Far away from my phone. Chaos da ਘਰ ਹੈ phone, social media, you know. So I use it for like 15 minutes every day because I want to share my music with the world and share my thoughts with the world. But when I'm sitting by the river that's flowing, just like I'm flowing in my life, I'm feeling gratitude, deep gratitude, immense presence, and I feel like the little girl in my heart, the little girl from Punjab, has won. फुल मून नाइट है, हल्की हल्की हवा है. नवंबर की जो पंजाब की हवा होती है वो है. थोड़े से क्लाउड्स हैं, वो चांद को कवर कर लेते हैं, फिर हट जाते हैं चांद के ऊपर से. जैस्मिन सैंडलर्स बैठी हुई हैं. क्या फीलिंग है? रोमांस चल रहा है. खुद से रोमांस कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, मैं खुद वाला बात नहीं कर रही. किसी के साथ में? There's a beautiful song
that I love Baddal, I love Badal, है ना? And I mention stars and clouds and rain and breeze so much in my songs. I mean, I can literally, from the top of my head, I can sing you some songs I've written that are all about nature. One of the cult classics of my legacy is Baddal. And the fans who really, really love me, who are gonna get matching tattoos with me, by the way, they love me for Baddal. And it goes like this. बदल ही आ गए जमीन ते फैसे दो कश पीण दे जिंदगी लगदी हसीन जी ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਏ ਸੀਨ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਸੇ ਦੋ ਕਸ਼ ਪੀਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਲੱਗਦੀ ਹਸੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਏ ਸੀਨ ਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲੈ ਆਦੇ ਆ ਹਨੇਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲੈ ਆਦੇ ਆ ਹਨੇਰੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਫਿਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਫਿਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਸੇ ਦੋ ਕਸ਼ ਪੀਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਲੱਗਦੀ ਹਸੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਏ ਸੀਨ ਕੀ Outstanding. Outstanding. There's a song called Hanera on my third album, What's in a Name. मैं पूछ रही थी ना आपके नाम का क्या मतलब जी है? जी जी. What's in a Name? It's a vintage, I think, Shakespeare. Of course. जी जी. And I'm so inspired by little things I've heard all through my life, right? Whether it's La Via en Rose, which is so powerful in my life because I called my album Gulabi, and then Shakespeare. कहीं से आप कुछ सुनते हो, कहीं आपको कुछ दिख जाता है, कोई sign मिल जाता है, and then that becomes a part of your life. We're all so inspired by what we see, you know, which is why it's so careful of what you consume on social media or on TV or who you spend your time with, because we become what we are surrounded by, what we hear, what we see, right? You agree? Absolutely, 100%. So What's in a Name was my third album, and the first song on the album was called Hanera, and it's about the breeze. You were talking about the moon, the clouds, the breeze. ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪਾਗਲ ਸੀ, when the breeze was crazy. ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ. Hanera is darkness. It's you and I, and it's dark out. Like that scene that you just described. I've written a song about it. That's beautiful. ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਸ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰਾ. Wow, wow, wow. That was a beautiful note. Jasmine, thank you very much. It was truly amazing talking to you. हमारा बस चले तो इस तरीके से हम जो imagery है, we can keep on creating images and keep on talking about Give it. me one more. One more? Okay. सड़क है, दोनों तरफ पहाड़ है, खाली सड़क है, अच्छी सड़क है, कोई नहीं है. Okay, and फिजा में there's a mix of piano and guitar, and you're walking. What's the feeling like? Isn't that so beautiful? I've written songs about all the feelings you are making me visualize. So, this is not a released song. It's probably going to be on my next album, which I will drop sometime in the future when I'm ready. सुनहरी ने रावां तुरदी मैं जावां. Wow.
ਹੱਸਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਹੱਸਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾਵਾਂ Wow. ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਰਾਵਾਂ ਉੜਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ Beautiful. Thank you very much for your time, and congratulations on the super stardom that you're enjoying currently. It's a very unique sort of stardom that you're enjoying, and I'm sure that you're going to go from strength to strength. And next time that we meet, you'll be a much bigger star, and hopefully like a movie star as well. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. That was Jasmine Sandler. So this very special Legacy Conversations, Simian Health Presents Legacy Conversation with Faidul Sharia. I hope that you had a good time.